Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Hope you are all very fine and good and enjoying the good health. May Allah protect us all. Today is 24th June and we are going to start the third topic of biology first year chapter 1, that is staining. Okay. So first of all we have to discuss the definition of staining, the technique used to obtain the contrast between different structures. जब आपके पास कोई भी एक स्ट्रक्चर है वो विजिबल नहीं है, यू हैव टू मेक इट विजिबल. आप देखते हैं ना माइक्रोस्कोप में जब आप कोई चीज़ स्लाइड लगाते हैं तो वो बड़ी विजिबल होती है, वरना सेल्स आपकी बॉडी में कलर्ड नहीं होते हैं. ठीक है, उनको कंट्रास्ट किया जाता है, उनको कलर किया जाता है. ठीक है ना. सो वो कलर विच वी आर यूजिंग टू मेक द कंट्रास्ट, टू मेक द थिंग्स विजिबल, उसको हम कहेंगे स्टेन, and we use it for a technique that is called staining. Okay, so first we have the types of staining. Types of staining based on the uses of stain. Okay, so a single staining and differential staining, these two are the types of staining. So first is the single staining. In single staining we have to use only one type of stain. ठीक है, इंडिविजुअली आप किसी भी एक चीज़ को कलर करना चाह रहे हो और आपने उसमें सिर्फ एक ही स्टेन यूज़ किया है तो उसको आप बोलेंगे सिंगल स्टेन. ठीक है, लाइक अगर मैं आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल बताऊं तो आप ये देखें कि ये अगर एक कलर है ग्रीन सपोज और आपने इसको सिर्फ ग्रीन कलर किया है, एक ही डाई यूज़ किया है, तो आप इसको सिंगल स्टेनिंग कहेंगे. ठीक है, बट इफ़ यू आर मेकिंग द थिंग इन कंट्रास्ट, लाइक आप देखो आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं 1 2 3. ठीक है, सो इफ़ यू आर यूजिंग 2 or more than 2 colors to making the contrast, then you will call it as differential staining. ठीक है, सो बेटा यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर प्लेन एक कलर आपने यूज़ किया है, स्टेन यूज़ किया है किसी भी एक कंपोनेंट को डाई करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल स्टेनिंग. एंड इफ यू आर यूजिंग 2 stains to make the 2 different things visible or to making the contrast between 2 different things, then we call it as differential staining. Okay, so for single staining we have few examples, that is borax carmine, which can be used to stain the nucleus. It will gives you the pink or reddish color. Then hematoxylin, it will also be used for the nucleus to make it visible in a cell. ठीक है, so only one stain is used for only the one organelle of the cell, so that's why we call the term single staining. Okay, but then we have differential staining. Differential staining means to make the difference, to make the contrast. So if we have to stain to different parts of the cells, different structures of the cell, like borax carmine, that can be used for the nucleus, and the eosin for the cytoplasm, to make these 2 structures visible under microscope and can be best examined, then this staining is called differential staining. Okay, so beta differential staining ho ya single staining ho, we are concentrating on a stain. So what is stain? What is the nature of stain? Why do we use the stains? ठीक है, ये तो ठीक है कि हम उसको टेक्निक यूज़ कर रहे हैं स्टेनिंग की, लेकिन उसमें जो हम स्टेन यूज़ करते हैं वो क्या है? So what is stain? This is the MCQ number 11 in the ICA book, that the chemicals used for obtaining the contrast in a staining is called dash. ठीक है, so the answer will be stain. Okay, stain मतलब color. Then we have the composition of stain, not given in your book, please note it down. So composition of stain is composed of 2 parts. Obviously it is a chemical, so made up of some molecules, organic or inorganic, whatever. So the structural part, which is benzene ring, you can see here, this is C6H6, the structural part, and is also colorless. Okay, then we have functional part. दिस बेंजीन कैन नॉट इम्पोर्ट कलर. आप बेंजीन को गिरा दी किसी भी चीज़ के ऊपर, वो आपको कोई कलर नहीं देगा. सो देयर इज समथिंग विद द बेंजीन दैट इज प्रोवाइडिंग कलर और स्टेन टू द ऑब्जेक्ट विच वी आर डीलिंग इन द लैब टू मेक द थिंग्स क्लियर, टू मेक द थिंग विजिबल. दैट इज अ फंक्शनल पार्ट एंड दैट फंक्शनल पार्ट इज कॉल्ड क्रोमोफोर. ओके, क्रोमो मीन color, 4 mean producer. So the color
color producer part of this functional ring is called chromophore, and the chromophore plus benzene ring together makes the chromogen, or you can say stain. Okay, so in biology, in staining, we would use the term chromogens, but these structures can be obtained in organic chemistry where we cannot call it as chromogens, okay, or stains. Then this is the simplest structure of the stain, which is the picric acid. Picric acid is a stain used to stain the components of leaves, so its structure is ट्राइनाइट्रोफिनोल. ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है ये. सो ट्राइनाइट्रोफिनोल अगर आप देखें बेटा, बेंजीन रिंग के साथ 3 नाइट्रो ग्रुप एंड 1 OH ग्रुप अटैच है. सो दीज फंक्शनल ग्रुप्स प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक टू द बेंजीन स्ट्रक्चर और बेंजीन रिंग, एंड दैट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इज इंपॉर्टिंग कलर. ठीक है, विच इज ड्यू टू दीज 3 नाइट्रो ग्रुप्स एंड OH group as well. Okay, then we have the type of stains. So there are different types of stain based on their usage, duration and then nature. So the first is usage. देखिए, आप लैब में यूज़ कर रहे हो, मैंने बाहर से प्लांट सेल लाया, मैं उसकी स्लाइड बनाती हूँ. तो प्लांट सेल की स्लाइड बनाने के लिए मैं उसके पार्ट्स को डिफ्रेंशिएट करना चाह रही हूँ. तो मेरे पास लिविंग सेल है, मैं उसके पार्ट्स को यूज़ करना स्टेन करना चाह रही हूँ. तो मैंने कुछ ऐसा स्टेन यूज़ करना है जो कि लो कंसनट्रेशन में यूज़ तो हो, लेकिन वो नॉन टॉक्सिक भी होना चाहिए कि वो सेल को डैमेज ना कर दे. ठीक है, सो बेटा, वाइटल स्टेन्स आर दो स्टेन्स विच आर यूज्ड इन low concentration as well as they are non-toxic. They must be non-toxic. If they are toxic, they would destroy the living structure, and obviously we could not see anything in the microscope. Okay, then there are two types of vital stains. The first is the principal stain. It is also called first stain and the primary stain, and the second is the counter secondary or second stain. ठीक है, so for explaining this thing I have an example. It is also given in chapter 6, but यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उसका brief introduction देती हूँ कि ग्रैम हमारे पास एक साइंटिस्ट थे. He was a Dutch scientist and he was working on the bacteria. ठीक है, बैक्टीरिया पे जब उन्होंने, उनके पास डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया थे, he was working on them and he used to dye them with a stain that was crystal violet. ठीक है, उनको उन्होंने डाई कर दिया क्रिस्टल वायलेट डाई के साथ. जब क्रिस्टल वायलेट डाई से इन बैक्टीरियाज को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज को डाई किया, तो एट द एंड उनको सारे बैक्टीरिया का कलर वायलेट मिल गया. आपके पास वाइट दुपट्टा है, आप सबको डाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा? वायलेट कलर मिल जाएगा. ठीक है, इसी तरह उन सब बैक्टीरिया का कलर भी वायलेट हो गया. लेकिन अब साइंटिस्ट से कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन तो उनकी होगी, तो उन्होंने क्या किया कि उन वायलेट बैक्टीरिया को वॉश किया एसीटोन के साथ. आपको पता है कलर वॉश, नेल पॉलिश लगा दो, उसको वॉश करने के लिए भी आपको एसीटोन चाहिए होता है. सो कलर को वॉश किया एसीटोन से, एक्चुअली कलर को नहीं, बैक्टीरिया को एसीटोन में डाला, तो एसीटोन से उनका कलर, उसको उसमें बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले कि उनके पास 2 टाइप्स के बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए. ठीक है, कुछ बैक्टीरिया उसमें ऐसे थे जिनका क्रिस्टल वायलेट डाई रिटेन था, यानी उन्होंने अपना कलर लॉस नहीं किया था इवन आफ्टर वॉशिंग विथ एसीटोन. बट सम ऑफ द बैक्टीरिया हैव लॉस्ट देयर कलर एंड these have lost their violet color after washing with acetone. So those bacteria which retained their color, they were called as gram-positive bacteria, and those which have lost their colors, they were named as gram-negative bacteria. ठीक है, now here comes the principal stain and counter stain. ठीक है, so अगर आप देखो बेटा, तो ये जो बैक्टीरिया जिनके ऊपर फर्स्ट स्टेन यूज किया था क्रिस्टल वायलेट, that was the principal stain, first stain, प्राइमरी स्टेन. तो इसको हम प्राइमरी स्टेन कह सकते हैं क्योंकि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाई कर दिया. ठीक है, और वो उनके लिए नॉन टॉक्सिक भी था. ठीक है ना, बट अब वो बैक्टीरिया जिन्होंने अपना कलर लॉस कर दिया, उनको एक हेल्पिंग स्टेन चाहिए. ठीक है, उनको दोबारा डाई करना है. सो द नेक्स्ट स्टेन वाज saffronin, which act as a counter stain to dye the gram-negative bacteria which have lost their violet color after washing with the acetone.
So hope it is clear. When the things are first dyed, we will use the principal stain, but if they could not maintain their color, we can use the second stain, and second stain will be the counter stain. ठीक है? So आपका MCQ number 17 ICA की book में है. What are counter stains? So the counter stains are those stains which are used on a specimen or whose colors are the contrast cannot be obtained from the primary stain. ठीक है? Then based on duration, आपकी बुक में चार्ट बना हुआ है, उसमें बहुत सारे परमानेंट स्टेन्स भी गिवन है और आपको टेम्पररी स्टेन्स भी गिवन है. ठीक है? जो परमानेंट स्टेन है, आई हैव एन एग्जाम्पल, ईजी एग्जाम्पल एज आई एम यूजिंग थ्रू आउट. सो द बोरेक्स कार्मीन विच कैन बी यूज टू स्टेन द न्यूक्लियस. Once the nucleus has been stained with the borax carmine, it will be for throughout, it cannot be lost, so that's why it is called permanent stain. While the second is temporary stain, aniline sulfate, it is a temporary, you can use it for the time being and after that it can be removed. So it is used for dyeing the lignin, and lignin is the part of cell wall of woody plants. Okay. Then we have third category, that is the nature of the stain. So based on the nature of stain, we have three types: acidic, basic and neutral. Acidic stains are those which provides a negative charge during ionization. As we have an example of picric acid, यहाँ OH group है, जब ये ionize होगा H loss हो जाएगा, O पे negative charge आ जाएगा, so this will be called as acidic stains. ठीक है? While those which have the positive charge on their functional group, they will be called as basic stains, and those which do not have any charge or do not possess any charge during ionization, they are called neutral stain. So for acidic stain, we have an example of eosin and picric acid. For a basic stain, alanine blue, that is given in your book, and it is used to stain the fungal hyphae and spores. ठीक है? hyphae क्या होती हैं बेटा? फंजाई की पूरी बॉडी को आप बोलते हैं माइसीलियम. उसमें जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हाइफी कहा जाता है. इफ़ यू हैव टू स्टेन द हाइफी और द स्टाक ऑफ द माइसीलियम ऑफ फंजाई, you would use the aniline blue. Along with that, spores of fungi, which are the reproductive structures found on the fungi, so they will also be dyed with the aniline blue. Then crystal violet, so I have given the example that it can be used as a permanent stain for the gram-positive bacteria. ठीक है? अच्छा, then yes, and this crystal violet dye cannot be used as a permanent stain for the क्या कहते हैं gram-negative bacteria. Okay? Then we have neutral dyes, and the neutral stains is have an example, neutral red. Neutral red is used to stain the lysosomes. Lysosomes are the part of the cells which helps in the phagocytosis or eating or engulfing of the foreign bodies which are harmful for us. ठीक है? So ये सारे structures जो हैं बेटा, ये हमारे पास स्टेनिंग में आते हैं. आपने इनको याद रखना है, although कि आपका कोई short question constitute नहीं करते बोर्ड का, but they are important for the practicals as well these MCQs. आपको इस टेबल में से भी कोई ना कोई MCQ पूछा जा सकता है कि like eosin gives dash color upon staining to cytoplasm. ठीक है? और cytoplasm can be stained with dash dash and provides dash color. ठीक है? So any type of MCQ can be asked. अगर आपको ये टॉपिक याद है और आपको पता है कि इसमें क्या चीज़ किधर लाई करती है, तो आपके लिए MCQ सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता. ठीक है? और यहाँ पे जो MCQ नंबर 17 है एनिलीन ब्लू, ये भी आपकी IC के बुक में गिवन है. सो प्लीज़ इनको आपने अच्छी तरह से अपने पास नोट डाउन करना है ताकि आप आसानी से अपने MCQs को सॉल्व कर सकें. ऑल्दो दे आर नॉट गिवन इन योर बुक बट इन ICA बुक. ओके.